Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration. MPA code number is 403. I am Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram, and I am your instructor for this course. And before starting discussion on the course, let us have a brief review of what I do in my life, in my career, in my profession. Okay, first of all, I'm by profession a professor, and I did my PhD in management sciences. Initially, I did my MBA from Quantitative University, then I did my MS from USA, and then from Pakistan I did my PhD. I have almost 22 years of experience in teaching field, and at present I'm visiting faculty member with different prestigious universities all over Pakistan. Furthermore, I am a master trainer of some of the most important and significant organizations in Pakistan and abroad. Recently, I completed one of the seminars on distance education in Jilin University, China. And I have written about 27 research articles published in international research journals, and I am also the executive editor of International Review and Management Research Journal. Now there are you can, if you want to know more about my career, if you want to know more about my studies, these are the contact numbers and my email ID. You can always contact me or you can email me. Now let us start our discussion on the course. So before discussing the course, let us have a brief review of marks distribution of this course. Now the first thing is we have divided the course in 5 different parts, starting from quizzes, assignments, sessional exams, graded discussion boards, and then of course the final exam. Now during this course you will have to attempt 4 quizzes and the total percentage is 10, and then you will have to complete 4 assignments and the total percentage is 10. Then there are 2 sessional exams having weightage of 25%, and there are 4 graded discussion boards, marks are 5. And then finally we have the final exam that carries 50% weightage. So the total course is divided into these 5 parts. Now before starting studying this course, I suggest you that you should go through this slide at least 2-3 times, so you should have a very good idea that what you are going to do in this course. Now let us discuss the major objective of this course. The first one is this course equips students with analytical, methodological, and practical expertise needed to positively contribute to development required in various countries. Now definitely this is really one of the most important courses in your area of study. So when we talk about this course, of course this course helps the students to get the analytical skills. Now this is really very important. Now ask yourself, how many of us really involved in doing the analysis of situation? Like आप अपनी एक इर्द गिर्द के अपने circumstances को देख लें, start from your home life, then talk about your studies, then talk about your social studies, then talk about your relatives. So how many of us are involved in doing some kind of analysis? Because when we are involved in doing analysis, we need to follow certain parameters. So with the help of this course, inshallah ta'ala, we all will be able to understand and develop the analytical skills.
And of course, we will, with the help of this course, will try to get the practical expertise. Now, how we can get the practical expertise with the help of this course? Of course, when I will be giving you more practical examples, like examples from Pakistani organizations, examples from foreign organizations, national level organizations, regional organizations, international organizations, multinational companies, examples from the public sector of Pakistan, private sector of Pakistan, non-governmental organizations of Pakistan and abroad. Now, with the help of these discussions, we will get a strong grip on whatever is going on practically, the ground reality. And then of course, after getting this analytical, methodological and practical expertise, of course, this will contribute to development required in various countries. Because when we talk about country level development, these skills are really very important, right? So let us assume that if the people of any country, if they lack these skills, like for example, if they lack practical expertise, if they lack those analytical skills, of course, this will definitely become a big hurdle towards their goal attainment. So this is really very important, that in order to develop any economy of any country in the world, this is really very important that we should all try to develop these skills. And of course, this course will help a lot. The next objective is this course examines strategies for better performance and efficiency, and in particular the reduction of poverty and inequality, particularly with reference to Pakistan, and then of course generally with reference to developing countries of the world. We will focus our discussions during this course on these areas. Like for example, how to improve performance. Now when we talk about performance enhancement, what comes in your mind? Okay, there are two things when we talk about performance of employees. The first thing is efficiency. The second is effectiveness. Now, how do we differentiate efficiency and effectiveness? Like for example, with minimum input, we try to get the maximum output. Now, meaning that if you spend 100 rupees and that is the input in your business, and then you try to get the maximum output. For instance, you want to earn 100 or more than 100 rupees. So if you input 100 rupees and if you are earning 100 rupees according to economics laws, that is called break-even point. And that is also a kind of profit. Now, in efficiency, what the organization is doing here, that if they are highly efficient, so with the help of minimum input, they are trying to get the maximum output. Okay, efficiency. And now the effectiveness. Now effectiveness means that the results, whether we are able to achieve our results or not. Now these results are the desired results or the desired targets. Like for example, when we talk about any organization, in the coming slides we will also see that how an organization works. But here I just want to briefly quote one brief example here, that input, process, output. So you are doing input, then of course process, and then of course there is output, right? And that output is called the effectiveness. So if you are able to achieve your targets, if you are able to achieve your goals, objectives, it means that you are effective. The more you achieve your targets, the more effective you are. The less you achieve your targets, the weaker you are, the less effective you are. Meaning that we need to focus on both efficiency and effectiveness of an organization, of the employees, of the groups. Why? Because without having both,
we cannot achieve our desired results, because in these days we don't see monopolies. There is a tough competition going on in the market. Now, if we are only effective and not efficient, that will create a problem, and vice versa. If we are efficient but not effective, this will also create problem. So in order to compete in the market, we need to be both efficient and effective. Now, and then of course, another major objective of this course is reduction of poverty and inequality. Of course, in Pakistan, we have this common problem of poverty. And then, of course, there are issues of inequality. According to our religion, Deen Islam, there should be equality. There should be no discrimination based on any factors. It is not allowed. So whether we talk about gender, whether we talk about caste, whether we talk about religion, whether we talk about male, female, urban, rural, so discrimination is not allowed. And of course, the Constitution of Pakistan also provides us that there should be equality in Pakistan. So with the help of this course, we will see that how we can become a team member to reduce poverty in Pakistan. So as a Muslim, as a Pakistani, it is our basic responsibility to, of course, move for these wonderful causes. Now the next objective of this course is, by critically examining the theory and practice of development administration at the international, national, and regional levels in a variety of contexts. Now what does it mean? Now it means that in this course, we will not only see the theoretical aspects, we will also equally focus on the practical aspects. So whatever is going on in the area of development administration, planning, not only in Pakistan but also in other countries as well. So we will focus on the regional level, we will focus on the national level, and of course we will focus on the international levels. And of course, with a variety of context. Now context here means that we will see the different micro and macro factors. Now, how do we differentiate micro and macro factors of any organization, of any country? Of course. So whatever is, for example, if we take the example of ABC company. So when we are studying the micro forces or micro factors that has some impact on the performance of organization, it means that all the persons who are working within that organization, they are included in micro forces. And then of course, when we talk about macro level factors, it means that whatever is going around that organizations, in that सराउंडिंग्स, जो इर्द गिर्द के आपके हालात हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या हो रहा है. Of course, like for example, taking the example of inflation, taking the example of terrorism, taking the example of corruption, taking the example of environmental changes. These are few of the examples of macro factors. So of course, with the help of this course, हम देखेंगे कि थ्योरी क्या है, बुक्स क्या कहती हैं, और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे. और हम एक डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, डिफरेंट कल्चर के साथ, डिफरेंट सेटिंग्स के साथ हम देखेंगे कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पॉसिबल इम्पैक्ट, और क्या क्या इम्पैक्ट हो चुका है. हम दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे इस कोर्स में. एंड ऑफ कोर्स दिस इज another very important objective of this course. Now the course seeks to provide learners with an understanding of the processes generating social change
and with the skills and abilities to respond to such change. Of course, this is really very important. When we talk about change, we mean that we need to have a positive change. So not only in Pakistan, we are talking about all the developing countries in particular. So a positive change is required. Now, when we talk about change, what do we mean by change? क्या मतलब क्या है इसका change का? आपके ज़हन में क्या आता है कि हमें क्या change करना चाहिए? Like for example, कि आपको नया सूट पहन लेना चाहिए, नए शूज़ पहन लेना चाहिए, आपको क्या कोई नई कार, नई बाइक, नई साइकिल खरीद लेनी चाहिए, या कोई आपको किसी नई जगह जाके खाना खाना चाहिए. When we talk about change, there are three areas that needs change. When we talk about, particularly when we talk about the developing countries. The first change we require in Pakistan is we need to have a positive change in the attitude and behavior of the people of Pakistan. Now, this is the most important change we all need. इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है. Now, that niyat, we need to focus on that. So when we talk about niyat, it means that our attitude, the way we think, our perception, our thinking, right? So that is all what attitude is. And then of course action part, our body language, our facial expressions, our eye contact, gestures, postures, oral communication, written communication, all of these are called behavior. तो जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में होती है और अभी हमारे चेहरे से या हमारे वर्ड से बाहर नहीं आती, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं. और जो चीज़ दूसरे हमें देख के समझ सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज को, हमारे चेहरे को देखकर या आइज को देखकर या हमारे वर्ड से, ऑरल या रिटन से, दैट इज द एक्शन पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड बिहेवियर. सो मीनिंग दैट बिहेवियर इज कमिंग out of that attitude. So the source is the attitude. Somebody asked me one day one question, that what is the difference between Pakistan and superpower? I said one thing. There is only one difference: attitude and behavior. So we need to focus on that, developing and strengthening that attitude and behavior. This is the first change required in Pakistan, and of course in developing countries as well. The second change we talk about is, of course, the technology. Now, without having the latest technology, how we can move forward? Of course, this becomes really difficult. So first of all, we need to adopt the new technology, and of course simultaneously at the same time we need to focus on building our own technology. Now this is really very important, because if you depend on others forever, of course this will not help you forever, and this will of course will not give you the desired benefits जो कि हम इस चेंज से लेके आना चाह रहे हैं. So attitude and behavior में positive change, number 2 technology, and number 3 is structure. Now structure means what? Structure means an organization, rules and regulations. In public sector of Pakistan, we have the vertical organizational structure. In the private sector of Pakistan, we have the horizontal organizational structure. Now I advise all of you to study these two terms, horizontal organizational structure and vertical organizational structure. Now vertical is like this, like जैसे सीढ़ी होती है, like step 1, 2, 3, 4, 5, 6, you go from top to bottom to top, and the file, like the file in public sector goes from
step 1 to step 2, 3, 4, 5, 6, and then when the chief signs the files, it comes back through the same channels like 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So that is wastage of time. That is wastage of energies. That is wastage of resources. So in contrast, we have in private sector of Pakistan, we have the horizontal organizational structure. Horizontal, like we talk about, the number of channels are they are less. There is direct feedback from the low management to the top management. There is direct interaction, and of course that improves performance, that reduces delays, and you know what the customer really needs. In these days, customers, they give a lot of importance to time and quality. And both of these two things are possible if we focus on the feedback and if we eliminate those time delays. So that is only possible if we move towards improving structure of our organizations in developing countries. Now, when we talk about these changes, of course, when you bring in these changes, people, employees, they do not accept these changes easily. Because whenever there is change, there is resistance. Like for example, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे कोई कहता है कि थोड़ी देर के लिए भाई सामने वाली चेयर पे बैठ जाए, तो ठीक है, मैं यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाऊँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि मैं इस बारे में सोचूंगा नहीं? I will definitely think in my mind कि भाई क्यों मुझे यहाँ से उठाया गया? मैं यहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ, आपको मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे कह रहे हैं यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाएं। Now, इसमें थोड़ा सा आप अपनी, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि यूज योर एनालिटिकल स्किल्स। ना एनालिटिकल स्किल्स को जब आप यूज करेंगे तो आप थोड़ा सा देखेंगे कि resistance to change is a natural phenomena. It means that we need to accept this reality that people who think, they resist. Now, in some people, they resist, have high resistance, and some people they have low resistance, and some people they have some moderate or medium kind of resistance. But there is always some resistance there. Now, so what we need to do here is that in order to bring in positive changes in the attitude and behavior, in order to bring in, adopt or create technology, and in order to bring changes in the existing rules and regulations of doing business, of running of our organizations, you know, we need to work on how to minimize resistance to change. And as a HR specialist, I believe that we can try to find out the root causes that why people resist change. I always say one thing that पेट का दर्द ज़्यादा important होता है या पेट के दर्द की वजह? Of course, the root cause is more important than symptom. Symptom क्या है कि आपको पेट में दर्द है, for example, और root cause क्या है कि उसकी वजह क्या है. अगर आप अपनी efforts करते हैं symptom को ख़त्म करने के लिए, तो you will take painkillers and you will keep on taking painkillers. आप लेते हैं, आपका दर्द कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है, आप कहते हैं ओके आई एम फाइन, कुछ घंटे बाद दोबारा पेन होता है पेट में, आप दोबारा ले लेते हैं पेन किलर, लेकिन सिलसिला कब तक चलेगा? डेफिनेटली देयर आर बिग इश्यूज, देयर आर बिग प्रॉब्लम्स. सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि बजाय ये कि सिम्टम को ही हम फोकस करें, वी नीड टू फोकस ऑन दी रूट कॉजेस. नाउ द रूट कॉजेज आर lack of awareness. People resist change because most of the people they have lack of awareness. They have fear of the unknown. पता नहीं क्या हो जाएगा. मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे ऑफिस में जब नया नया कंप्यूटर आया
तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका क्या फायदा है। ऑफ कोर्स ये नहीं है कि वो लोग अपने काम में ऑनेस्ट नहीं थे या अपना काम करना नहीं चाहते थे, बट एक इट्स अ नॉर्मल थिंग कि उनको जब अवेयरनेस नहीं है तो ऑफ कोर्स दिस इज अ नेचुरल क्वेश्चन कि भाई हम क्यों एक्सपेंस करें, हम क्यों ये नया काम शुरू करें, इसका फायदा क्या है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनको अवेयरनेस हुई, जब उनको अवेयरनेस मिली, जब उन्होंने खुद काम किया, तो वो जो रेजिस्टेंस थी अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सो मीनिंग दैट कि आप रूट कॉजेज पे काम करें, लैक ऑफ अवेयरनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, एंड देन ऑफ कोर्स लिंक रिवॉर्ड्स विद टारगेट्स। आप जो काम कहते हैं ऑफिस में एज पर रूल्स, डेफिनेटली मैं करने के लिए तैयार हूं, बट वहां पे जब आप टफ टारगेट्स देते हैं तो उसके साथ आप उसको रिवॉर्ड के साथ कंपनसेट करें। अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू एम्प्लॉइज के एक एवरेज एम्प्लॉई है और एक एक्सीलेंट एम्प्लॉई है, तो दोनों का डिफरेंस हमें कहां नजर आ रहा है। तो वो डिफरेंस आपको उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम ये बात यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम चेंज लेके आते हैं तो देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज, और रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करके उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है, उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है, राइट। So we can educate, we can communicate, we can reward people, we can send them for trainings, etc., etc., etc. So of course, according to research, almost all the philosophers and researchers, they agree on one thing, that if we focus on the root causes of a problem, we can have long-term solutions. And if we focus on the symptoms of the problem, we are only focusing on short-term problem solutions. Now, another major objectives of this course are, the course seeks to provide learners with an understanding of crisis management. Now, when we think about crisis, what comes in your mind? आपके क्या आता है ब्रेन में जब आप क्राइसिस की बात करते हैं कि भाई क्राइसिस क्या होता है। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं, हम दुनिया की बात करते हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, तो क्राइसिस से आपकी क्या मुराद है। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन कंट्री पाकिस्तान। जब हम क्राइसिस की बात करते हैं, वी हैव लोड शेडिंग प्रॉब्लम, वी हैव लाइक दीज फ्लड्स, वी हैव इन्फ्लेशन, वी हैव दीज अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव करप्शन इश्यूज, terrorism. So all these crises are there. So of course, when in this course we will focus on crisis management, and of course when we are able to understand the root causes of crisis, this will help us to make, of course, develop much better plans, and of course improve our administrative practices. Developing performance-driven organizations. This is, of course, one of the most important objectives of this course, how to develop performance-driven organizations. As earlier discussed that कि हमारे यहाँ organizations को किस तरह से move किया जाए कि उनकी performance जो है वो rapidly increase हो। तो of course जब हम performance की बात करते हैं, performance-driven organizations की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? Motivation, इंटरेस्ट, विलिंगनेस। तो आपका जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा कोई काम करने का या ना करने का, आपकी जितनी ज्यादा विलिंगनेस होगी, इसका मतलब यह है कि आपकी जितनी ज्यादा विलिंगनेस होगी, आप कोई काम दिल से करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपकी मोटिवेशन ज्यादा होगी। और कोई काम आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है तो डेफिनेटली आपकी मोटिवेशन उतनी नहीं होगी, बल्कि समटाइम आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज रिक्वायर्ड।
नाउ क्रिएटिविटी और इनोवेशन कैसे आएगी? ऑफ कोर्स विदाउट मोटिवेशन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन नॉट पॉसिबल। एक काम करने का अगर आपका दिल ही नहीं है, आपको लगता ही है कि जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, आपको लगता ही है कि मुझ पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, मैं ये काम करना ही नहीं चाहता, मुझसे करवाया जा रहा है, मैं लाइक आपका एटीट्यूड और बिहेवियर या आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है उस काम को करने का, तो आप मुझे बताएं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन कहां से आएगी? वर्किंग मेथड्स इंप्रूवमेंट कहां से आएगी? परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कहां से आएगी? So meaning that कि first of all we need to see कि how employees are motivated. जैसे पहले हमने बात की कि we need to find out the factors जिसकी वजह मदद से हम अपने employees को motivate कर सकते हैं. And definitely once we motivate our employees तो बाकी काम I think is not very tough, right? So we can send our employees for trainings, we can go for use on the job trainings, we can use off the job training methods. Like for example, on the job, off the job training methods में क्या difference है? जैसे कि नाम से जाहिर है, on the job. Now on the job means कि उसी job पे रहते हुए, उसी job के दौरान अपने office premises में आप अपने colleague से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से आप गाइडेंस लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और काम सीखते हैं. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी ट्रेनिंग पे भिजवा देती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आपको किसी वर्कशॉप पे भिजवा देते हैं, आप स्टडीज पे चले आते हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री चले आते हैं कुछ सीखने के लिए, तो that is off the job training methods. Now here I recommend that we need to use here both the type of methods, on the job and off the job training methods. So when we are focusing on the root causes के how we can motivate our employees, I think कि आपने शायद पिछले कोर्सेज में Maslow's needs hierarchy पढ़ी हुई हो. Abraham Maslow's needs hierarchy. Now that needs hierarchy is one of the major theories of motivation. Abraham Maslow says that there are different stages how people are motivated. The first one, the basic stage, is physiological factors. Now physiological factors or physiological needs are, for example, your food, water, so इनके जिसके बगैर जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, जिसके बगैर आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, जिसके बगैर इंसान लाइक ऑक्सीजन, जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, द नेक्स्ट स्टेज इज योर सेफ्टी नीड्स. आप कहते हैं कि मुझे शेल्टर मिलना चाहिए, मेरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मुझे लाइफ रिस्क ना हो, मेरी अगर जॉब है तो जॉब सिक्योर हो, मुझे जॉब में मतलब परमानेंट जॉब हो, रेगुलर जॉब हो जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है, या ये कि जॉब ये ना हो कि एक दिन मैंने काम किया और नेक्स्ट डे मैं जाऊं अपने ऑफिस तो मुझे कहा जाए कि आपकी जरूरत नहीं है. अनसर्टेनिटी ना हो, स्टेबिलिटी हो जॉब टेन्योर में, तो सेफ्टी. सो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद वी मूव टुवर्ड्स सेफ्टी नीड्स, और जब सेफ्टी नीड्स हमारी पूरी होती हैं तो वी मूव टुवर्ड्स सोशल नीड्स. नोबडी कैन लिव अलोन. हमारे यहाँ लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि वी नीड टू हैव आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, सो नोबडी कैन लिव अलोन. सो हमें फैमिली की जरूरत है, हमें अपने फ्रेंड्स की जरूरत है ताकि हम एक बेहतर सोशल लाइफ के साथ आगे मूव करें. एंड देन अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, जब सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम नीड्स. नाउ सेल्फ एस्टीम नीड्स मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट
having a wonderful designation. Like for example, Director General of ABC company, having a lot of powers, authority, big house, big cars, strong name, things like that. And then after fulfilling self-esteem needs, according to Abraham Maslow, we move towards the next stage, and that is called self-actualization. Now, self-actualization means that we need to do something beyond self-interest. In simple words, self-actualization means कि working for the welfare of others. Like हमारे यहाँ जो बहुत मोतबर नाम हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की हम बात करते हैं, तो जिन्होंने जो उनका सोशल कॉजेस के लिए काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं ईदी साहब की, तो ईदी साहब जो हैं, ही इज ऑन दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल, तो वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो ये एक स्टेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह मूव करते. नाउ coming back to our discussion कि how we can increase the performance of our organizations or how to develop the performance driven organizations in the developing countries, particularly in Pakistan, we should know that how employees are motivated, and this Abraham Maslow's needs hierarchy tells us how. The next major objective of this course is employment promotion measures needed in Pakistan. Of course, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है. हमारी ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं यंग जनरेशन की, तो there is a huge number of people who are unemployed. तो इन अनएम्प्लॉयड जो एक हमारे स्किल्ड जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे अनस्किल्ड हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन मेजर्स जो हैं उनको हम पाकिस्तान में किस तरह से उसको आगे लेके आएं, किस तरह से उसको इंश्योर करें, उसको किस तरह मैनेज करें ताकि अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को पाकिस्तान में मैनेज किया जा सके. ऑफ कोर्स, जैसे हमने शुरू की स्लाइड्स में बात की कि रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. So when you look at this slide, that we are trying to minimize, and inshallah we are with the help of this course we are trying to eliminate that unemployment issue in Pakistan. And of course, so reduction of poverty and of course reduction of inequality, तो वो तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी employment promotion measures के ऊपर हम अमल करें. And then poverty in Pakistan issues and measures, of course, जैसे अभी हमने बात की कि the major issue of Pakistan is poverty. तो बहुत एक बड़ा नंबर है जो लोग जो हैं वो poverty, मतलब it's a big issue. They don't have money for medicines, they don't have money for their, enough food, and they don't have money for their kids to for different activities. Right? So this is really very important for education, for health, for a good living. This is really very important that we need to manage this issue of poverty in Pakistan. So we will talk about in this topic when it comes that issues, and of course what are the corrective measures. And then of course another major objective is women development and income generation. More than 50% of the population of Pakistan is comprising of females. So how we can develop females of Pakistan, and of course how we can promote income generation activities in Pakistan, this is really very important. So with the help of this course we will focus on this area as well. Now this course covers a range of areas such as development administration. So इस कोर्स में हम development administration को देखेंगे कि ये होती क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसकी नेचर क्या है, इसका स्कोप और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की पहली तो ये बात है कि इसकी ज़रूरत क्या है इसको डिस्कस करने की,
इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसकी क्या एक वैल्यू है, इसको हम डिस्कस करेंगे. एंड देन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस. हम अपने इस कोर्स में डेवलप जो नेशंस हैं और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. एक हम कंपैरिजन देंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है. सो वी विल नॉट ओनली टॉक अबाउट द डेवलपिंग नेशंस, वी विल आल्सो टॉक अबाउट द डेवलप्ड नेशंस. सो वी विल आल्सो डिस्कस इन दिस कोर्स कि ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से जो एक डेवलप्ड नेशंस वजूद में आ चुकी हैं दुनिया में, एंड वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से स्टिल हम एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर हैं. Of course, in this course, we will also talk about the various models of development administration. तो इस वक्त जो latest models available हैं, उन तमाम models को हम discuss करेंगे relevant to development administration. And then development planning को हम discuss करेंगे इस course में. Concepts and rationale को बात करेंगे development planning के. And of course, planning for sustainable development. जब हम sustainable development की बात करते हैं तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हैव प्रोएक्टिव प्लान्स. तो हम डेफिनेटली इस कोर्स में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल गिव अस लॉन्ग टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स in developing countries and of course in Pakistan as well. In this course we will also talk about the mixed economy model. That is of course one of the most important models. And then we will talk about multi-level planning. We'll talk about its concepts and practices. Of course, कि different levels के ऊपर planning किस तरह, what is the ideal way of doing planning? क्योंकि we can plan everything. So, but at different levels we cannot plan in the same manner. So on different levels, like for example low level, middle level, top level management, we need to have a multi-level planning. So we will discuss the concepts and various practices in developing countries, and then planning of contemporary development issues in education and health. Now जब हम education और health की बात करते हैं तो immediately हमारे brain में क्या आता है? Developing countries like Pakistan. We also have these two major problems. जैसे हम अक्सर कहते हैं health is wealth. और of course education के बारे में जब दीन इस्लाम कहता है कि इल्म हासिल करो महद से लेकर लहद तक, मीनिंग दैट कि इस दुनिया में आने से लेकर इस दुनिया से जाने तक आप इल्म हासिल करें. तो एजुकेशन एंड हेल्थ बोथ आर मैंडेटरी. अगर किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन को आप डेवलप करने की बात करेंगे, किसी भी एरिया को डेवलप करने की बात करेंगे, तो एजुकेशन और हेल्थ में इंप्रूवमेंट के बगैर दैट इज नॉट पॉसिबल. इन द नेक्स्ट area we will cover in this course is agriculture and industry of developing countries. कि whatever is going on in Pakistan and whatever is going on in other developing countries and other developed countries, we will see what are the similarities, what are the differences, how we can get benefit from each other. What I believe that with the help of this course, we will not only highlight कि हो क्या रहा है दुनिया में, we will try to get the benefit out of it कि हम जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो दूसरे हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हो रहा है या डेवलप कंट्रीज में हो रहा है, उनके तमाम के तजर्बात से हम फ़ायदा उठा सकते हैं in our agriculture and in our industry as well. And of course, we can move towards creativity and innovation as well. Now in this course we will also cover the areas of participatory approaches to development planning and administration. Of course, without participatory approach to development planning and administration, we cannot have the best plans. We cannot have the most efficient and effective organizations.
So this is really very important that we need to involve our employees in decision making. Somebody asked me that why in public sector of Pakistan, why we see the lack of motivation of employees in public sector of Pakistan. The answer is very simple. We need to involve our employees in decision making. Now, how we can do this thing? We need to get the feedback from our employees from all levels. Low level, middle level, top level management employees. We need to get the feedback, and then of course with the help of that feedback we can make our decisions. So this is really very important. And without feedback, if we are not incorporating the feedback of our employees from all levels of management, this becomes almost impossible to improve our performance. Only those organizations having, that they are getting benefit from the feedback mechanism in their organizations. So we are not trying to get the feedback from our employees only, we are trying to get the feedback from outside the organization as well. जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, यहाँ पे मेरे ज़हन में आ रहा है कि हम दो तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं, ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस. ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस. और जैसे कि नाम से जाहिर है, ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो ना सिर्फ अपने एम्प्लॉय से फीडबैक लेती हैं बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी फीडबैक लेती हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, एंड देन बेस्ड ऑन दैट फीडबैक दे सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, दे इंप्रूव परफॉर्मेंस, दे ब्रिंग चेंजेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस. In closed system organizations, what happens that only feedback is taken from within the organization. कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में उनसे फीडबैक लिया जाता है और उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से फीडबैक नहीं लिया जाता. So that looks incomplete. So of course, benefits of open or flexible organizations are much higher as compared to closed system organizations. Because as earlier जब हमने बात की कि survival of the fittest, तो how is it possible कि आप एक closed system organization हो, बल्कि यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि closed system में भी बिल्कुल अगर निचले लेवल पे हम चले जाएं, क्या फीडबैक ले ही नहीं रहे. क्लोज सिस्टम में तो ये है कि हम अपने एम्प्लॉय से फीडबैक लेके उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से फीडबैक हम नहीं ले रहे. लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर आप खासतौर पे लो लेवल से और मिडिल लेवल से फीडबैक उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे अपने डिसीजंस में, तो एम्प्लॉइज दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट, दे स्टार्ट लूजिंग देयर मोटिवेशन, दे गेट डीमोटिवेटेड. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान में एम्प्लॉइज का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करें, तो हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में फ्रॉम ऑल लेवल्स. स्ट्रेंथनिंग द लोकल इलेक्टेड लीडर्स कैपेबिलिटीज, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी कैपेबिलिटीज को हम स्ट्रेंथन करेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल मूव टुवर्ड्स वंडरफुल परफॉर्मेंस. एंड देन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, द रोड अहेड, ऑफ कोर्स this is really very important that we need to focus on long-term plans, long-term strategies. If we are having only short-term plans, this will create problem. So whatever we do now, it has an effect on the organization in the times to come. So it is really very important that जो भी डिसीजन आप लेते हैं, जो भी प्लान्स आप बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जो भी चेंजेस लेके आते हैं, जो भी आप इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं, तो आप एक मैप बनाएं कि आइंदा आने वाले सालों में आपके क्या प्लान्स हैं, आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं. Whenever we have the end in mind, whenever we start something, हम कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हम उस एंड को सामने रख लें जो हम अचीव करना चाह रहे हैं,
तो ऑफ कोर्स वी कैन इम्प्रूव आवर बिगनिंग्स। तो जो लोग एंड को सामने रख के अपने काम का इनिशिएट करते हैं, अपने काम को स्टार्ट करते हैं, उसकी बिगनिंग करते हैं, they go for wonderful performance. Now let us discuss the significance of this course, Development Planning and Administration. Okay, what is the importance? Why there is a need of this course? Now let us discuss briefly that in recent decades, the world has witnessed a much faster pace of economic growth, social advancement, and expansion in international trade than at any previous time in history. Of course, जब हम किसी चीज़ की एग्जाम्पल देते हैं तो definitely we need to give a comparison कि इससे पहले क्या हुआ है। तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो सोशल एडवांसमेंट है, जो एक्सपेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड है, जिस रैपिड स्पीड से चल रही है, जिस तरह ग्रो कर रहा है फास्टली, ऑफ कोर्स हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो दैट इज वाई डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की यहां बहुत ज्यादा जरूरत है। Without having the most efficient and effective development planning and administration in particularly in developing nations, and of course in developed nations as well, we cannot meet the requirements of the market. Now continuing our discussion on the significance of development planning and administration, the efforts of governments, private investors, and rural urban communities have been significant in sustaining this development drive. So of course it's a teamwork, it's not an individual effort. So all sectors, all segments of our society, government, private sector, public sector, individuals, communities, they have a role in it. Now further continuing our discussion on the significance of development planning and administration, we see there is a gap that remains between rich and poor nations, as well as between regions and people within the same country. तो एक तो दो तरह के गैप्स हमें नजर आ रहे हैं, जो एक अगर मेजर गैप्स की बात करेंगे कि एक तो हमें रिच एंड पुअर नेशंस के दरमियान एक गैप नजर आ रहा है, और दूसरा एक रीजन के अंदर रहते हुए अगर हम देखें कि किसी एक तो रिच नेशंस हैं आपकी, एंड देन वी हैव दिस पुअर नेशंस, तो इनके दरमियान एक गैप है। और एक पुअर नेशन के अंदर भी रहते हुए अगर हम देखते हैं कि एक कंट्री के अंदर पुअर नेशन है या रिच नेशन है, उसके अंदर उस नेशन, उस एक कंट्री के अंदर भी देयर इज अ गैप ऑफ रिच एंड पुअर। In many cases, disparities between rich and poor are growing. Now, ये जो disparities हैं, ये जो differences हैं, rich and poor के, ये वक्त के साथ साथ in most cases grow कर रहे हैं. And of course, that like motivates us to work in the area of development planning and administration. क्योंकि जब हम अपनी प्लानिंग को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज द गैप ऑफ रिच एंड पुअर, नॉट ओनली इन one country but also inshallah in so within different countries. When we talk about this gap, so we can try to minimize this gap with the help of this course. So while some countries and individuals race ahead in an increasingly globalized world, some lag behind. Of course, survival of the fittest. जो जितनी मेहनत करेगा, जितना एफिशिएंट होगा, जितना इफेक्टिव होगा, वो आगे निकल जाता है, और जो वक्त के साथ, मार्केट के साथ नहीं चल सकता, वो पीछे रह जाता है. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वी एंश्योर दैट कि हम वक्त के साथ चलें, हम अपने बेंचमार्क सेट करें, हम अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करें, हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन की तरफ मूव करें. Now, continuing our discussion on the significance of development planning and administration. Now, development remains a crucial challenge for governments
and organizations the world over. So here we are not talking only about the organizations, we are also talking about the various governments in the world. So that is a big challenge. It's a crucial challenge. And of course, we have no other choice but to accept this challenge. For developing countries, this means making the best use of their human, financial, physical and information resources. Now, इस चैलेंज को, इस क्रूशल चैलेंज को जो डेवलपमेंट का अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट बुलेट में, इसको मीट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज: ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. लेट अस ब्रीफली डिस्कस दीज 4 resources. Human resources means that all the persons who are working for the organization at any level, कि जो भी employees and employer किसी organization के लिए काम कर रहे हैं, they are called human resources. Now customers are not the human resources. And then of course financial resources, the money, the capital, the investment. तो वो जो पैसा आप लगा रहे हैं, जो आप investment लगा रहे हैं, जो आप capital लगा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, of course that is called the financial resource. And then we have the physical resource. Now physical resource means that this, like for example, taking this example here, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, the land, the building, this studio. So all of these, like this computer, this camera जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, this table, these lights. So all of these are called the physical resources. And then finally we talk about the information resources. Like for example, कि information आप कहाँ से हासिल करते हैं? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट वगैरह वगैरह. तो ये आपके information resources हैं. तो किसी भी organization को most efficiently, most effectively run करने के लिए ज़रूरी है कि we need to have a good ratio of these 4 type of resources. Now in developing countries की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री और पाकिस्तान जो है उसके पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास ये नहीं है, पाकिस्तान के पास वो नहीं है. आई थिंक ये यहाँ पे जरूरत है कि बजाय ये कहने की कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है. The only important strategy we can make here is that जो हमारे available resources हैं, इन चारों resources की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे available resources हैं उसकी allocation अगर appropriate हो जाए, most appropriate तरह से अगर हम उसको allocate करें तो definitely we can improve the situation in Pakistan. So developing countries की जब हम बात करते हैं तो बड़ा issue ये नहीं है कि उनके पास resource constraints हैं. बड़ा इशू ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं चाहे वो कम हैं, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन अवेलेबल रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है, जो एलोकेट किए गए मुख्तलिफ सेक्टर्स को, उसको रीथिंक करने की जरूरत है, उसको रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर एलोकेट करने की जरूरत है. लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका काम करने का एक्सपीरियंस है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखते हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्डियंस हैं, आपके बड़े बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं जो जॉब कर रहे हैं या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखते होंगे कि ऑफिस के अंदर सम टाइम कुछ रिसोर्सेज की जरूरत किसी एक डिपार्टमेंट में ज्यादा होती है और दूसरे डिपार्टमेंट में उस रिसोर्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑफिस के अंदर हो सकता है कि आपको सिर्फ 4 लोगों की जरूरत हो लेकिन वहां पे 11 लोग काम कर रहे हैं, और किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर आपको 11 लोगों की जरूरत है और वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं. तो आपने करना क्या है कि यू नीड टू डू द रीएलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. आपने लोगों को ट्रेन करना है, ट्रेन करने के बाद उनको अप्रोप्रिएट जगहों पे आपने एलोकेट करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उनको अपॉइंट करना है और उनसे काम लेना है, उनको मोटिवेट करके. तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल यहां पे मैंने देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने अपने रिसोर्सेज को जो अवेलेबल हैं
उनको अगर हम उनको बेहतर तरह से एलोकेट कर लें इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस, तो वी कैन गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स. Trained expertise is crucial in achieving desired goals. Of course, trained expertise is very important. Like, हम जब goals की बात करते हैं तो what is the difference between goals and objectives? क्या difference है? Okay, goals are the long term and objectives are the short term. Now, goals जो हैं उन goals के अंदर से objectives निकल रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने जो लॉन्ग टर्म जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमारी एक मोस्ट वेल ट्रेन्ड एक्सपर्टीज होनी चाहिए. तो बजाय ये कि हम सिर्फ रिसोर्स की बात करें कि जी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, व्हाई नॉट कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको बेहतर तरह से एलोकेट किया जाए, और डेफिनेटली ट्रेन्ड जो एक्सपर्टीज है दिस विल हेल्प अस डू दैट. Now, again talking about the significance of development planning and administration. For the people and governments of developed nations and international organizations, this means ensuring a framework for more equitable and sustainable forms of development. This is really very important. कि अगर हम people और governments की बात करते हैं, developed nations की और international level की organizations की बात करते हैं, तो वहां पे बात करते हैं मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. क्या आप इक्विटी की बात करते हैं, आप सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म आप प्लान्स की बात करते हैं, आप शॉर्ट टर्म बात नहीं कर रहे. तो इट मीन्स दैट कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, उनको एक डेवलप कंट्रीज की तरह हम करना चाहते हैं, हम उससे भी आगे जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज करना, नंबर वन मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और उसके साथ साथ हमें अपनी इक्वालिटी को, अपनी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक प्लान्स की यहाँ पे जरूरत है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज situations and processes that facilitate the development process and to formulate appropriate policies for meeting development goals. So यहाँ पे सिर्फ हम ये बात नहीं करते कि इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हमने एक प्रोसेस को इस तरह से फैसिलिटेट करना है कि एम्प्लॉइज दे गेट मोटिवेटेड एंड देन दे आर from inside outside they are willing to do assigned tasks and to formulate appropriate policies for meeting development goals. तो हमें definitely अपनी जो policies हैं, rules and regulations हैं, उसको accordingly हमें उसमें improvements लेके आनी है. Now quickly अब जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि we talk about two things, efficiency and effectiveness. Now efficient means what? Efficient is defined as working without waste or using a minimum of time, effort and expense. जैसे हमने बात की कि with minimum input you're trying to get the maximum output. कि आपकी मिनिमम वेस्टेज हो, आपके टाइम की, आपके रिसोर्सेज की, आपकी एफर्ट की, आपकी एक्सपेंस की. सो मीनिंग कि आपका इनपुट कम से कम हो. देन इफेक्टिव इज means having the desired result. Once the desired overall result is defined, the task leading to the result can be completed efficiently. So of course जब हम results की बात करते हैं, हम targets की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं effectiveness की. तो जब हम management की बात करते हैं, we talk about efficiency and we talk about effectiveness. कि जी आज के इस lecture में हमने इस कोर्स के objectives की बात की, हमने इसकी सिग्निफिकेंस की बात की, हमने देखा कि किस तरह से हम इस कोर्स से बेनिफिट ले सकते हैं. पर्टिकुलरली हमने ये बात की कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम किस तरह उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम किस तरह अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं. हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात की इस कोर्स में, आज के लेक्चर में. इसके अलावा हमने देखा कि थ्योरी और प्रैक्टिस को साथ लेके हम कैसे चल सकते हैं. आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप सबको आज का लेक्चर जो है आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा, और
मैं आप सब लोगों को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आज हमने जो कुछ डिस्कस किया, इस डिस्कशन को अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ लिंक करें, इस डिस्कशन को अपने एक्सपीरियंस के साथ लिंक करें, इस डिस्कशन को अपनी होम लाइफ के साथ लिंक करें, इस डिस्कशन को आप अपनी सोशल लाइफ के साथ लिंक करें, और आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, इस डिस्कशन को आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ लिंक करें। तो जब आप अपनी इस डिस्कशन, आज की डिस्कशन को जब आप लिंक करते हैं, तो आप इस कोर्स को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, और आपको एक आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स जो हैं, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। और जैसे हमने इस कोर्स के शुरू में बात की कि वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द analytical and critical skills of our students, and of course this will lead us towards improvements in our organizations, particularly with reference to developing countries, with reference to Pakistan. Thank you very much all of you, and inshallah see you in the next lecture. Khuda Hafiz.